Assalamu alaikum. Hello everyone. This side, a fourth year medical student. Trying to survive the exam pressure as you people are as well doing. I know exams are coming, but I don't feel like studying. So today I am starting on 5th January 2026 of taking up a 60 days non-stop challenge of posting every day the content which is going to help us to pass out our final year MBBS examination. So here it goes. Bismillahirrahmanirrahim. So today I'm going to discuss the topic gastric outlet obstruction, an important question from surgery paper. Gastric outlet obstruction is a malignant condition. Obstruction near pyloric antrum, which is a part of a stomach. या तो पाइलोरिक एंट्रम के पास मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मैकेनिकली या तो वैसा बना हुआ है एंट्रम कि आपका खाना पास नहीं हो रहा है, या फिर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटी. और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटी में इसलिए होती है क्योंकि आसपास के नर्व्स रिलैक्स कर देते हैं. Then इसके causes में we have benign as well as malignant. Benign में we have 37% causes, 37 malignant में we have remaining percent causes. तो benign में first common is pyloric stenosis, congenital hypertrophic pyloric stenosis. CHPS जो कंडीशन दिखती है, स्टेनोसिस इन द D1 पार्ट ऑफ डिओड्रम. फिर सेकेंड आता है सेकेंडरी एसिड पेप्टिक डिजीज. और सेकेंडरी एसिड पेप्टिक डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ H पाइलोरी इन्फेक्शन. ये सिकाट्राइजेशन और हीलिंग फेस में दिखता है. और H पाइलोरी इन्फेक्शन एक मैलिग्नेंट कंडीशन है. और मैलिग्नेंट कंडीशन में वी हैव अदर ऑप्शन गैस्ट्रिक कैंसर्स, पैंक्रियाटिक कैंसर्स, मास फ्रॉम द हेड ऑफ द पैंक्रियास एंड मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द लूप ऑफ द डिओडेनम. फिर एनएसएट से अपने को गैस्ट्रिक अल्सर होता है एंड H पाइलोरी से डिओडेनल अल्सर. अब दीज आर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन. बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या है? अगर उसकी कॉमन इटियोलॉजी पूछा जाए तो वी कैन राइट गैस्ट्रिक पॉलिप्स, बेजोर्स, जो eating of other type of contents like trichobezoar. People have a habit of eating their own hairs. ओके तो वैसी कंडीशन में गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. एंड देन कंजेनाइटल डिओडेनल वेब्स में हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई ऐसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है. एंड अदर इज कैंसर ट्यूबर वी कैन ऐड एम्पुलरी, पैंक्रियाटिक या डिओडेनल कैंसर. वो आसपास की जगहों पे अगर कैंसर है तो इट विल अफेक्ट द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन. नाउ इन पैथोफिजियोलॉजी वी हैव इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक पे एंड एक्सट्रिंसिक दो तरीके के हैं. तो क्लिनिकल फीचर्स में वी हैव फर्स्ट वॉमिटिंग विच इज़ अ कार्डिनल सिम्टम. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी मतलब या तो स्टमक के अंदर से भी प्रॉब्लम हो सकती है या आसपास में. जो एक्सट्रिंसिक है अपन बोले कि डिओडेनल, पैंक्रियाटिक, हैप्युलरी कैंसर में एक्सट्रिंसिक वैरायटी आते हैं. इंट्रिंसिक में वी हैव गैस्ट्रिक कैंसर. Then vomiting is the cardinal symptom of gastric outlet obstruction. Now bilious, non-bilious, it occurs in 1 hour of meal. Then significant weight loss हो सकता है, malnutrition and gastric dilatation is seen due to vomiting and risk of aspiration pneumonia. Then second is pain severe in epigastric region. Diffuse type of pain is seen due to stretching of gastric mucosa and feeling of fullness. On examination, the patient will have dehydration, malnutrition, succussion slump, which is the characteristic sound hand. The patient lies in a supine position. You have to place a bell of your stethoscope on the patient's epigastric region, and then the patient is asked to then you have to shake the patient, and then when again you make the patient lie down supine and you keep your stethoscope in a flow momentum only, then you can hear liquid flowing around in the abdomen of the patient. That is called succussion slump. And visible gastric paralysis can be seen due to any obstruction. Then or ausculto percussion, you can see dilated stomach. और मेटाबॉलिक इफेक्ट्स गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ये होते हैं कि हाइपर क्लोरेमिक, बिकॉज न्यूट्रिशन का कैसा भी इम्बैलेंस हो रहा बॉडी में. तो क्लोरीमिया कम हो जा रहा है, क्लोराइड कम हो जा रहा है, पोटेशियम कम हो जा रहा है. मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल आइसिडूरिया कैन बी सीन. एंड ये कंडीशंस की वजह से कन्वल्शंस, रैपिड ब्रीथिंग एंड कन्फ्यूजन आर सब classical symptoms as well seen. But the most important one is vomiting within non-bilious time within 1 hour of meal. And pain, diffuse kind of pain. So investigation में वीडियो contrast barium studies, barium swallow, esophagus में अगर कोई डिफॉर्मिटी है, barium meal follow through. अगर gastric outlet obstruction है तो barium meal follow through में positive findings are seen. And barium enema for colon disorder. Investigation of choice is upper GI endoscopy. Visualization up to D2 junction is done to check for any outlet obstruction.
Then electrolyte study, because sodium chloride potassium कम हो जा रहा है, तो we do electrolyte study as well. Then ECG to rule out any cardiac pathology. Management में first of all we pass a Riles tube for proper nutrition of the of the human. Then 3% KCl to correct electrolyte imbalance, and if anemia is there, blood transfusion is there. Total parenteral nutrition, central and peripheral line is set up, and you have to be careful to avoid thrombophlebitis, because the patient is as well lacking nutrition, and instead of doing some good, you will do more harm if you not put up the line correctly. The stomach wash infuse saline the patient to reduce gastric mucosal edema. And endoscopy can as well be therapeutic as well. You can do balloon dilatation endoscopic procedure for early cases of GOO, because but it can even because it will diagnose also how much damage is there, and if you can even dilate that part and help in the easy passage of the contents from the stomach. But the risk factor is balloon dilatation, where they can cause gastric perforation. Then other surgical treatment we have, due to any benign cause, if gastric outlet obstruction is seen, then vagotomy should be done. And vagotomy are of two types: truncal and highly selective. Highly selective vagotomy is the treatment of choice, surgical treatment of choice, because it preserves the nerve of Lataget, which helps in gastric emptying. And in the causes, we said that delayed gastric empty is one of the causation of GOO. So instead of doing more good, you will do more harm to the patient. That's why you have to go for highly selective vagotomy, preserving the nerve of Lataget. And another type of vagotomy is truncal vagotomy, and complications is that is delayed gastric empty. So treatment of choice for truncal vagotomy, if causing delayed gastric emptying, like अगर आपने वो nerve damage कर दी, तो that time you have to pyloroplasty और gastrojejunostomy. Gastric और jejunum को anastomose कर देना, या फिर pylorus को you have to anastomose. Then enterectomy can also be done if G-cell hyperplasia is said, and ulcer is seen, then we have to go for enterectomy. And for congenital hypertrophic pyloric stenosis, which is an important pediatric condition, then we have to go for Ramstead procedure. Hope all people liked the video. If it was of any help, hit like the button and subscribe button. Thank you.